Well, hello and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. And the big news is coming from the ground zero. Brabourne gets to see autumn in summer, which crushed Punjab's batting lineup. And it turns out to be the result of today's clash. Delhi wins by 9 wickets. Wasim, thank you for joining us. Nikhil हमको join करेंगे थोड़ी देर में. लेकिन शायद, I know you were rooting for Punjab, लेकिन हालांकि ये नहीं हुआ है. But I have to say good morale and probably good for Delhi क्योंकि उनकी टीम में काफी लोगों को कोविड भी हो चुका था. तो a very unusual game and a very quick game, right, Wasim? Yeah, absolutely. I mean, it's a crushing defeat for Punjab. मुझे लगता है कि पंजाब के मोराल के लिए it will be a big hit. I thought, they probably going into this game as favorites. मुझे ऐसा लगता है, but to get bowled out on 115, it's not going to win you many games. Even though Jitesh Sharma tried, Mayank Agarwal had a decent start, but I think the spinners, Karishma bowled really well. Akshar Patel has been miserly, 10 for 2. Lalit Yadav did his job really well, got the big wicket of uh, Shikhar Dhawan. Kuldeep Yadav has been magnificent. They did their part. I think if you look at their spinners, they shared 6 wickets between them in the 10 overs that they bowled. So they did their job magnificently. And they came out all guns blazing, getting 80 runs in the power play from Prithvi Shaw and David Warner. Quick game. But I think, it must be a morale boosting for Delhi क्योंकि वो जो सिचुएशन में थे COVID का scare था, couple of their players are injured, but to come out and play like this is outstanding. It's a crushing win for Delhi and defeat for Punjab. To come back from here, I think Punjab will have to, lift themselves up because it can easily can go downhill from here. Because जैसे हमने बात की कि ऑप्शन में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे but they are not delivering. Such a powerhouse of batting, but to fold time and again for 115, they got all out on 135 in a previous game. So they need to sort it out. Because if you look at it, Rabada has come out to bat in the 16th over 4 times, Karishma. Yeah. So that is not going to solve a lot of problem. No matter how much you say that you want to play aggressively, but if you bat like this, you are not going to winning many games. But Delhi ticked all the boxes. They played really, really well. Absolutely, absolutely. Welcome, Nikhil. हम वैसे बात कर रहे थे that it's a shame about Punjab, but maybe a good moral boost for Delhi considering what they were going through. Since we have seen a great collapse, we should talk about Delhi's bowling department. How impressed are you with them, Nikhil? देखिए बहुत अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से जो विकेट्स गिरी, जो बॉलिंग चेंजेस ऋषभ कर रहे थे, हर बॉलिंग चेंज में लिटरली एक विकेट मिल रही थी. जो पहली शिखर धवन आउट हुए, आई गेस इट वाज जस्ट बैड लक बिकॉज अमूमन दैट बॉल शुड हैव बीन हिट फॉर 4. अगर वो बैट नहीं लगता तो वो वाइड कॉल होती. बड़ा रेयर होता है कि डाउन द लेग साइड उस तरीके से आप कॉट बाइंड होते हैं. इवन द विकेट विद मयंक अग्रवाल, इट्स जस्ट दैट they wanted to bowl tight lines to Mayank Agarwal. उसी तरीके से वो फील्ड भी सजाई हुई थी. 2 बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर थी, फिर वो बिल्कुल स्टंप टू स्टंप डाल रहे थे बिकॉज वो उनकी आदत है मयंक की. He likes to play that little dab towards third man. So they came with a game plan and they were able to execute that game plan beautifully. 6 wickets between the spinners. उस लिहाज से ऋषभ पंत बहुत खुश होंगे. अक्षर पटेल ने डेंजर मैन लिविंगस्टन को आउट किया. I guess बहुत जल्दी कदमों का इस्तेमाल किया था. So as a bowler, you had all the time in the world to just correct your length, and he got that ball to turn as well. And Kuldeep once again amongst wickets. So all in all, I think Rishabh will be happy with how the bowlers took that responsibility when the new ball was given to them to go out there and make sure Punjab doesn't post a big total on the scoreboard. Absolutely. Wasim, was the pitch helping the bowlers or was it a master stroke by Delhi? No, I don't think so. Karishma, when you come out to bat, जब आप पहले बैटिंग करते हो तो you give yourself a couple of overs, which I think Shikhar and Mayank did. They posted a 33-run partnership, so they played out the first 4 overs. They stitched a decent partnership, but what happened after that? That was not going to help them. Losing wickets after wickets, and again Rabada coming in the 15th over or maybe 12th over, in fact today.
So that is not going to solve the purpose. They had a little bit of partnership between Jitesh and Shahrukh, but that was not a massive one. The top guys like Shikhar, Mayank, uh, Bairstow, Livingston, they need to step up and post 180, 190 score. क्योंकि हमको पता है कि ब्रेबरॉन स्टेडियम में if you don't post that total, you are not going to win. Then the kind of start Prithvi and Warner did, probably 180, 190 भी कम पड़ जाते. तो पंजाब need to sort their batting out pretty quickly, क्योंकि मुझे लगता है कि even though we talk के रबाडा और राहुल चहर पे थोड़ा सा प्रेशर है बॉलिंग का, बट इफ यू बैट लाइक दिस आई डोंट थिंक दे कैन डू एनीथिंग. Okay, एक सवाल आप दोनों के लिए. With Kuldeep Yadav back in form, with Akshar Patel and Lalit Yadav being the perfect ally, which IPL side has the most potent spin attack? Is it Rajasthan with Ashwin and Chahal or any other side? मैं पहले आपसे पूछती हूँ निखिल, and then the same question to Wasim. I would, Kuldeep is getting wickets. अक्सर ये अच्छी जोड़ी है. But in terms of मुकाबले जिताना and also the kind of experience and on that day to turn the game on its head, I probably think with Ashwin and Chahal, खासतौर से जो चहल गेंदबाजी कर भी रहे हैं. So I probably feel maybe just a slight edge, a very slight edge, but I'd go with Rajasthan. Okay, and Wasim? I would probably at the start of the tournament I would have said Sunil Narayan and Varun Chakravarti. But I feel that Varun Chakravarti losing his form, and then he's being so expensive in the tournament that he's playing is so low of confidence. So I would say Kuldeep का जो अभी form है, and probably Akshar Patel also. Ashwin के बारे में I feel he bowls a lot of carom balls. Karishma, that is something which is I feel, I don't know, Nikhil will know better. I think he's such a class bowler. He doesn't trust his off spin that much, which is very, very surprising. I think he's far too good a bowler to not trust his off spin. As soon as the right hander comes on to bowl, he keeps on bowling the carom ball, which can be a defensive, it can be fine defensively, but I don't think he's going to give you a lot of wickets, even though he got Andrew Russell out, last night. But on most occasion, I don't think it's going to give you wickets. तो मुझे लगता है कि यजवेंद्र चहल पे बहुत प्रेशर होता है to pick up wickets. So I feel Kuldeep and Akshar and obviously Yajwinder Chahal and Ashwin, they are probably the two best attacks, I would say. Okay, और एक और सवाल वसीम आपके लिए, because you are part of the coaching of Punjab before, आपको क्या लगता है अभी ड्रेसिंग रूम में what are they discussing? Where do they need to? बर्तन तोड़ दिए. No, I think obviously everyone will be disappointed. I think ये इस तरह की गेम है करिश्मा कि you need to forget pretty quickly. If you keep on talking about it, you will have 10 negative points coming out. It's no point because सब professional cricketers है, everybody knows what mistakes they have done. There's no point pondering over it. So it's best you leave it there, you forget about it, and come out with a fresh mindset in the next game. You forget what happened in this game. The more you talk about it, I think you're not going to go anywhere. So it's best you don't talk, just leave it, sleep it over, and come back strong in the next game. I think so. Like obviously it's my job to ask these questions, but as human beings, we all have good days and bad days. Kabhi the best, you can have everything in order, even in real life, and the things don't work out. So I agree with you, but we have to sometimes ask these questions because I think there's a lot of pressure. Nikhil ji, aapke liye ye sawal. We were worried about Delhi's performance, but we could clearly see that the problem is in the mindset and not in the bio bubble. आपको क्या है about this? देखिए, you have to stay positive. जब आप इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, आप एक टीम का हिस्सा हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं और आप ये खेल खेलना चाहते हैं और आपके किसी ने कान पे बंदूक नहीं रखी कि आप आके खेलिए. सो लाइक यू सेड, बायो बबल में रहना करिश्मा आसान नहीं है. पिछले साल हम लोग बहुत समय हम लोगों ने भी बिताया है विश्व कप के दौरान. दोनों इस प्रतियोगिता जब हो रही थी पिछले साल, कभी कभी आसान नहीं होता, बट you have to, as athletes, as individuals, find ways to stay upbeat, stay positive. जिम जाना, यारों दोस्तों के साथ बात करना, different activities. और ये बहुत सारी franchises करती भी हैं. टीम रूम्स होते हैं, गेमिंग रूम्स होते हैं, आपस में वो मिल सकते हैं. लेकिन दिक्कत क्या थी दिल्ली के लिए,
जैसे ही मिच माश आए, टिम साइफर्ट, और जब उनके फिजियो पॉजिटिव हुए थे तो सब लोग क्वारंटीन में थे। तो वो 2-2 3-3 दिन आपने किस तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट रखना है ना, वो काम होता है फिर सपोर्ट स्टाफ का, कि आप उनसे बात कर रहे हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को आप ज्यादा समय अकेला ना छोड़े, क्योंकि हर खिलाड़ी, हर शख्सियत अलग तरीके से वो रिएक्ट करती है जब एक कमरे में होती है। बहुत से लोग शांत रहने में दे प्रेफर दैट, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सो एज सपोर्ट स्टाफ और एज अ कोच यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मैंने कौन से खिलाड़ी से क्या बात करनी है, उसको किस तरीके से संभाल के रखना है। ये भी एक कला रहती है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड बाकियों को मैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता, लेकिन अजीत अगरकर मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। सो कूडोज टू हिम how he's come being part of the Delhi side, और वो यंगस्टर्स के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। Ajit and I also hosted some shows together. Wonderful person and a good person to have on the team, I feel. अच्छा, एक और बात करते हैं. Let's talk about David Warner and Prithvi Shaw as they both showed us how to bat today. वसीम, आपको क्या लगा उनके परफॉर्मेंस के बारे में? Well, I mean, gonna know उनका, उनकी, उसका, उसकी, everything. Karishma, actually, their fourth consecutive 50-run partnership, so that goes on to show, how strong they are as a players. और जब आपके openers इस तरह का start देते हैं, Karishma, then, you got a base to build on. And this is, like I said, the fourth consecutive opening partnership of 50 plus. और जिस तरह से पावर प्ले में बैटिंग किया, I mean, they got 80 plus runs in the power play. तो आपका गेम तो लिटरली उन्होंने उधर ही पावर प्ले में ही खत्म कर दिया। एंड बोथ द प्लेयर्स आर अटैकिंग प्लेयर्स, एक राइट हैंडर है, एक लेफ्ट हैंडर है। तो इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर द बॉलर्स टू बोल द राइट लेंथ्स, बोल द राइट प्रोबेबली लाइंस एज वेल। और दोनों लोग मारते हैं, ऐसा नहीं कि एक मार रहा है तो एक संभाल के खेल रहा है। तो इट बिकम्स डबल हार्ड फॉर द बॉलर्स। तो आई फील के दे आर प्रोबेबली द बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन माय ओपिनियन, Warner and Prithvi Shaw, and when they get going, it's not that easy. Absolutely. Nikhil, can you please rate Rishabh Pant's caliber as a leader of the side? हमारे क्रिकेटिंग भाषा में वो कहते हैं ना, वो स्ट्रीट स्मार्ट, करू कप्तान। वो समझते हैं कि कौन से बॉलर से या कौन से खिलाड़ी से किस तरीके से उनका बेस्ट निकाल सकते हो। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था, अगर आप मुकाबला देख रहे थे, जब उन्होंने नेथन एलिस का विकेट लिया, कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड किया, कुलदीप यादव आके उनको जप्पी पाई, हक किया, और वो पूरा वो जो माहौल नजर आ रहा था ना, कि किस तरीके से एक कप्तान के आसपास सब लोग आ रहे हैं और खुश हैं, एंड ही इज बीन एबल टू हैंडल ऑल द यंगस्टर्स। और कुलदीप एक ऐसा गेंदबाज है, अपने पुराने फ्रेंचाइज कलकत्ता के साथ पिछले साल समय बिताने के बाद वो थोड़ा सा नाखुश थे, उनके कॉन्फिडेंस को वो ठेस पहुंची थी, वो धक्का लगा था। लेकिन पहले मुकाबले से मुंबई के खिलाफ उन्होंने वो विकेट निकाली और पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर मुकाबले में वो विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन हर विकेट निकालने के बाद वो कप्तान के पास जाते हैं, जस्ट टू शो इन वेरी फ्यू वर्ड्स ही इज गिविंग ऑल द क्रेडिट टू द कैप्टन फॉर हाउ ही इज बीन एबल टू जस्ट ट्रांसफॉर्म दैट यंग किड, और कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर झोंका है। तो पता चलता है ये कप्तान जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छे से चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Also, I want our viewers to share their comments and ask any questions from the experts using the hashtag not just cricket at cricktracker and at sports eye, because हम बहुत पसंद करते हैं आपके questions और हम जानना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, and what do you think of our show. अब वक्त आ गया है to take a look at the social tracker powered by sky247.net. Let's take a look. And let's see, the first one is Wasim, Jaffer, yourself only. Rabada's entry points at this season. Wow. Punjab need to find a way to arrest the collapses. ASAP, I see. And the next one, at this point of the season, Rahul Chahar has hit more boundaries than Odion Smith, Roman Powell, Jason Holder, and Vijay Shankar. More sixes than Virat Kohli. Okay. And do we have any more tweets? Okay.
We don't have any more tweets, I don't believe. Okay, so now that was our social tracker, and that was quite interesting. Let's talk about tomorrow's game. Let's look at the numbers tracker before I go on that. Let's look at the numbers tracker's points table. Is it going per your expectation, Wasim and Nikhil? एक बार देखते हैं where our lovely teams are. Take a look. देखिए Yeah, I दिल्ली think के, जी सॉरी वसीम, हाँ, दिल्ली के 6 अंक हो गए हैं, नेट रन रेट वो पॉजिटिव में हो रहा है। इस किस्म की जीत के बाद उनका मनोबल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जी वो समझते हैं कि, और गेंदबाजी के लिहाज से खास तौर से स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं। अब जो हम कह रहे थे कि थोड़ा सा वो विपक्षी टीम उनके बॉलर्स को टारगेट करने को देखेंगे, लेकिन आप जब 115 रन पे एक टीम को रोकते हैं तो वो कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड पहले तो 50% क्वालिफिकेशन होता था, लेकिन इस बारी 10 टीमों में से 4 ने क्वालिफाई करना है, सो यू हैव टू बी इन द टॉप हाफ, एंड वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस विल बी अ बिग बिग गेनर। Absolutely. चलो देखते हैं. Let's look at the most runs. Wasim, what do you say? I'm just showing our viewers the points table. Let's look at the most runs. well, Josh Butler is running away with the orange cap, isn't it? जो जिस तरह की फॉर्म दिखाया है, बिल्कुल पर्पल, पर्पल एकदम बिल्कुल फॉर्म में है. केएल राहुल is not far behind, and I am hoping कि he catch up with Josh Butler, and he will definitely, क्योंकि हर साल वो उस ऑरेंज कैप के पीछे रहते हैं केएल राहुल. It's going to be good fight. Fab Duplessis has come good again. Shreyas Iyer, I expected, जिस फॉर्म से वो आए थे इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज से. Hardik Pandya has been a surprise. There's no doubt about it. He has surprised one and all with the way he is batted. Taking the number 4 position and then taking that Gujarat Titans to the top. So that has been very refreshing. But Josh is the boss at the moment. The way he's batting, he's looking totally in different league altogether. Absolutely. चलो देखते हैं the most wickets. And Nikhil, if you can take us through this, please. खुशी की बात यह है कि इस सूची में विकेट में टॉप पे स्पिनर्स हैं, भारतीय स्पिनर्स। यूसी चहल और कुलदीप यादव, ये जोड़ी विश्व कप की तैयारी करती हुई 17 और 13 विकेटें दोनों की। और फिर नीचे आप आ जाइए, हसरंगा, फिर टी नटराजन, आवेश खान, ये पेस बॉलर्स। तो मैं खुश इस बात से हूं कि जहां 200 रन बन रहे हैं, 180 190 बन रहे हैं, वहीं पे स्पिनर्स और रिस्ट स्पिनर्स have been effective and wickets निकाल रहे हैं। और आज शाम को अच्छी बात यह है कि कुलदीप को शायद मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने वो 2 विकेट्स चटकाई थी। सो ही इज गेनिंग इन कॉन्फिडेंस, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट। Absolutely. वो था हमारा numbers tracker, which was powered by Sky247.net. चलो बात करते हैं कल की गेम के लिए. Let's move to Mumbai versus Chennai. They both are looking tired. They're looking tired of winning the trophy. So this year they both end up at the bottom of the table. I mean, we're looking forward to the clash. Nikhil and Wasim, quick choices for tomorrow's clash. Well, I think Karishma, it's a मुझे ऐसा लगता है कि वो पोजीशन की फाइट की गेम है. आई मीन, जो एक प्राइड की बात करते हैं, इट्स अ प्राइड वाली मैच है. आई मीन, ये राइवलरी आईपीएल में सबसे बड़ी है, मुंबई वर्सेस चेन्नई. तो मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग दे विल प्ले फॉर दैट प्राइड, एंड मुंबई फर्स्ट ऑफ ऑल to find that victory, they'll play for that, and they'll play very hard. You expect them to bounce back, and I hope they do that for the tournament's sake. You don't want them to lose and lose again. Kyron Pollard has recently retired from international cricket, so that was very surprising news came up today. With 2 at this point, T20 World Cup and then 50 over, so he's retiring in between the IPL. That was surprising, but he has to come good. Rohit Sharma has to come good. Bumrah has to take a lot of boxes they need to tick. I feel Mumbai. Chennai has been playing well in the last couple of matches. At least I feel they batted really well. Bowling has let them down, but somehow they're finding ways, to at least be competitive. So I feel it's going to be a good game. It's a pride game for both the teams, and I hope we'll get to see Mumbai win. I hope they at least get into the right side of the result for once at least. I know. And Nikhil? देखिए, बॉलिंग उनकी कमजोर नजर आ रही है, बिकॉज सभी टीमें जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आप विकेट नहीं देंगे, आप बाकी बॉलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं. सो दैट्स बिन देयर थॉट प्रोसेस.
बैटिंग के लिहाज से दे हैव मैच विनर्स, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, रोहित, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक, पोलार्ड, एंड देव ऑल बीन डूइंग वेल इंडिविजुअली। एक ही गेम में दो लोग खड़े होके नहीं रन बना रहे, दैट हैज बीन द बिगेस्ट वरी। सो इट टेक्स टू टू टैंगो, so you need a few partnerships coming along to win games. I think that's the most important thing for Mumbai. Absolutely. But I'm enjoying our partnership and we will continue this partnership to viewers for joining in. We will be tuning in tomorrow, 6:30 IST time to talk all things cricket. Thank you so much and we will see you tomorrow. Thank you, gentlemen. Thank you. and Good good night. night. Bye bye. Thanks.